हाय किड्स, कैसे हो आप लोग सब? आई होप यू डूइंग वेल. बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलेवेंट लेक्चर टुडे. सो आपकी बॉडी में होता है एक पीनियल ग्लैंड और ये पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है मेलेटोनिन और सर्टोनिन. मेलेटोनिन और सर्टोनिन बेसिकली मेलेटोनिन का काम होता है स्लीप वेक साइकिल और सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करना. इसके अलावा ये एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं डोपामीन. व्हेनेवर यू आर हैप्पी, whenever you are triggered, कुछ बड़ा अमेजिंग इंटरेस्टिंग सा आपको नज़र आया है, that's the time your body starts to secrete dopamine. In a way it also makes you feel euphoric, it makes you feel happy, and that is the reason your body gets used to it. By used to it I mean आपकी बॉडी को आदत हो जाती है डोपामीन की. What do I mean by trigger happy? आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, सडनली कुछ देखा, आपकी बॉडी ने डोपामीन सिक्रीट किया एंड आपकी बॉडी को स्लोली फेसबुक ओपन किया, आपकी बॉडी को स्लोली उस एक्स्ट्रा डोपामीन की आदत पड़ जाती है. एंड द मोर द अमाउंट ऑफ डोपामीन, इट्स जस्ट लाइक अल्कोहल, यू गेट एक्सट्रीमली एडिक्टेड टू इट. And that is the reason why you are unable to focus and concentrate, because your body now demands extra amount of dopamine. So to give your body or to feed your body extra amount of dopamine, you will have to look or get those triggers which release dopamine again and again. These triggers could be like for example opening an Instagram page, opening Facebook, seeing how many likes are there on your page, seeing how many followers you have, how fast somebody replies to your comments, how much of an engagement are you driving. And nearly everybody is on various social media platforms. Each of these social media platforms are areas of engagement, and because these are areas of engagement, that is the reason why those likes, shares, subscribes, comments, all of that community building is there, and that increases your dopamine and you get addicted to higher levels of dopamine and you cannot work in lower levels of dopamine. And that is the reason why when you sit down to study, your body demands dopamine, so you cannot control it, because that urge, it's like a toxin. That urge is so high that at that particular moment you want to go, you want to open your phone and you want to see what is there on your phone at that particular moment, see what all comments have come, what all likes are there, how many shares are there, and this becomes like a toxic path. Now what can you do? It's like a complete vicious toxic circle. What can you do to overcome this? Because जब आपके पास वो bandwidth free होगी, जब आपके पास वो time free होगा, यहाँ से निकलेगा, तभी तो उस time को आप invest कर पाओगे in something creative, पढ़ाई में या कहीं और. So you will require something which is referred to as the detox of dopamine, जिसको हम dopamine detox कहते हैं, जिसके बारे में आज का important lecture है. Number one, it is not at all easy to get a dopamine detox. It's very very difficult. बिल्कुल आसान नहीं है, बिकॉज अब आपकी बॉडी को वो हायर लेवल ऑफ डोपामीन की आदत पड़ गई है. नंबर टू, इसको टोटल डिटॉक्स करने के लिए आपको एब्सोल्युटली सोशल मीडिया से 100% ऑफ जाना पड़ेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, विच अगेन इज नॉट पॉसिबल. सो नंबर वन, योर बॉडी इज यूज्ड टू अ हायर लेवल ऑफ डोपामीन. नंबर टू, यू विल हैव टू गो ऑफ सोशल मीडिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बोथ ऑफ विच आर नॉट पॉसिबल. बट आई विल गिव यू दीज 3 थिंग्स which can maybe help you to overcome, to kind of go into a detox of dopamine, and it's really helpful. Number one, till the time you're actively studying, go off social media, especially the irrelevant ones. अगर आप किसी एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपके किसी काम का नहीं है, जो आपकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, go off it. It really helps. So वो सारी सोशल मीडिया को आप परमानेंटली डिलीट कर दीजिए, उनसे लॉग आउट मत कीजिए, अपना पासवर्ड चेंज मत कीजिए, परमानेंटली डिलीट कीजिए, बिकॉज आप लॉग आउट करके फिर लॉग इन करोगे, फिर पासवर्ड रीजनरेट करोगे. इट्स अ विशियस सर्कल. सो जस्ट परमानेंटली डिलीट दोज एप्स. नंबर वन. नंबर टू इज द फोन हैक. कोशिश करिए कि आप सुबह 15-20 मिनट अपना फोन चेक करिए पढ़ाई के टाइम पे, शाम को एंड इफ यू आर स्टडीइंग यूट्यूब लेक्चर्स उतने टाइम पे. आफ्टर दैट गिव योर फोन टू समबडी हु विल नॉट गिव इट बैक टू यू, जो आपको दोबारा ऐसा कोई लेक्चर देगा कि पढ़ाई करो, फोकस करो. गिव इट टू समबडी, जितना आपका फोन आपके पास रहेगा, दैट मच टाइम एटलीस्ट यू विल गेट किया मैं चलो ऑन कर ले, तो ऑफ भी मत करिए, मैं ऑन कर ले तो 5 मिनट, एंड दैट 5 मिनट्स बिकम्स 50 मिनट्स, 50 मिनट्स बिकम 5 आवर्स. यू नो इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. सो डोंट डू दैट. नंबर 3, इन योर वर्क आवर्स, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, सी यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपके पास कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आएगी, आप CIA FBI के हेड नहीं है, आप यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट नहीं है, आप US के प्रेसिडेंट नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, JEE की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. सो प्लीज
पढ़ाई के टाइम अपना फोन अपने पास मत रखिए, राइट? इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज अ पार्ट ऑफ द थर्ड वन ऑल्सो, इज यू नीड टू स्टे काम, बिकॉज वो एक अर्ज होती है, दैट कामनेस नीड्स टू कम फ्रॉम विद इन यू. सो ट्राई एंड मेडिटेट. आई यूज अ ब्यूटिफुल ऐप जिसका नाम है ब्लैक लोटस. इट truly is a phenomenal app. I try and use it, and I work, I do little meditation, even for 5 minutes की meditation है उसमें. Use that app, center yourself, calm yourself. It's really going to help. Go get the digital detox of dopamine. You need it, and it will totally increase your studies because your exams are very very close. Most importantly guys, इस लेक्चर के लिंक पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज लगाए हुए हैं. वेदांतु पर आ जाइए. You will see we are doing some fabulous work. 500-600 में आपको पूरे महीने के लिए टर्म 2 मिल जाता है 11th और 12th का. हमारा क्रैश कोर्स है, जिससे बढ़िया क्रैश कोर्स आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा. मतलब इतनी डिटेल में पढ़ाई होगी, टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, डाउट्स होंगे, और टेस्ट आपका जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक होंगे. मे बी 60, 70, 80, 90, 100 टेस्ट हो जाएं, क्योंकि आपका जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक वी आर गोइंग टू बी विद यू. सो डोंट फॉरगेट टू गो टू Vedantu BioTonic, link description पे जाइए. For pro memberships 11th and 12th, code use करिएगा VDPro to come to my classes. And for crash course VD NEET, go there, get the classes, and see you in my regular classes also. Hope you get a digital dopamine detox. Take care. Bye. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye.